It's a 80-80 battle. I'll win. I'm that much confident. Oh, close up. Oh, and it's Techno coming in from the defense side. मतलब ऐसा लगता है कि जो सोलो फाइट होता है, I win 90% of them. Genji forced to explode away into the sub. Techno in his mode. He finds safety. Paranoia. 11 on the spikes once more. Ninja. Oh, Techno with a cut. Not going to take it. Swing out. It's a long swing from Techno to do it. On time at lead. 12 to 12. It's anyone's game. Hi guys, welcome back to the UGH channel. We are here with the one and only True Reapers' youngest star, Techno, who of course has gone to quite some lengths since his rise in Valorant. Kafi had tak he has been now called as one of the best young players in our country. Techno. साहू साहब नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. कैसा रहा है आपका दिन? आज ऑफ डे आपका, लेकिन आपने टाइम निकाल के हमें समय दिया है और पायो वही बड़ी बात है. नहीं but please Techno, do tell me, I wanted to ask you first thing when I came here was what is it that powers you? For playing? नहीं बस generally. Powers me. What gets you out of the bed every morning? Because मैंने 2-3 साल पहले मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि बिकॉज मेरे घर पे कैसे बोलूं Esports क्या है कुछ नहीं जानते थे टिपिकल इंडियन फैमिली जो भी है. फिर देन मेरे दोस्त लोग ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था वैलो में, तो फिर उससे वंस आई रीच्ड इमॉर्टल सो उसका मेरे को थोड़ा होप आया कि ओके आई कैन डू समथिंग. उसका मैंने घर पे बोला था कि कह रहा है मतलब मेरे को कुछ करने दोगे अलग. तो सब लोग तो वही इंजीनियर डॉक्टर ही करते हैं, मेरे को भी वही करना था. घर से प्रेशर था. फिर मैंने समझा के मैंने मम्मी पापा को बोला था मेरे को प्लीज एक चांस दो, मैं अगर उसमें फुलफिल कर पाया मेरा ड्रीम्स देन आई विल बी वेरी हैप्पी. आप लोग भी चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो that dream I think. That dream. So you started off with a dream obviously कि कुछ करना esports में, लेकिन I want to know where exactly did you start your life? Because of course True Reapers is a step that's come way काफी टाइम से आपने from your chill court days till now has been a huge thing. But as a child, how was your life like? Tell me a little bit about what was not Techno. Tell me about you. Okay. So मैं क्लास 10 तक मैं पूरा टॉपर वाला बच्चा था. वाह. मैं वो तो I think वो सबको पता ही था कि देख के मैं सुबह जाता था 7 बजे स्कूल, 5 बजे तक आता था, देन 7 PM जो वापस ट्यूशन जाता था, 9:30 बजे पे घर आता था. Damn. तो पूरा पैक था. उसके बाद जितना टाइम मिलता था आई यूज्ड टू प्ले इन माय फोन, मतलब मम्मा के फोन पे खेलता था मैं. कभी पबजी हो गया, जब पबजी आया उसका पबजी खेलता था. उसके पहले एंग्री बर्ड्स, क्रिकेट्स, जो भी गेम होता था कजिन्स के साथ खेलना, like a normal Indian family. मतलब इतना ज्यादा कुछ सोशल मीडिया था ही नहीं उस समय मेरा. तो बस रियल लाइफ पे सब कुछ चल रहा था, ऐसा था. पूरा नॉर्मल बच्चा था मैं. Normal, completely normal life. Okay. So what did you used to do, were you interested in sports when you were younger कि सिर्फ ऐसे ही सिर्फ गेमिंग में ही था हमेशा? नहीं, मतलब गेमिंग में घर पे एक ऑफिस पीसी था, उसमें कभी-कभी मैं WWE, क्रिकेट 07 वो सब खेलता था. स्पोर्ट्स पे बस क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बट इतना खेलता नहीं था मैं, क्योंकि जगह नहीं था घर पे उस समय. वरना ज्यादा कर मैं मतलब क्या बोलूं, मैं ज्यादा कॉम्पिटिटिव था इन मैथ्स. आई यूज्ड टू मैं मैथ्स पे अच्छा था, तो वैसा. तो आई थिंक वाज दैट लाइक अ फैमिली थिंग कि खुद से मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, रैंडमली मैं जस्ट पता नहीं, आई थिंक मैं जब से ट्यूशन जाने लग गया था तो उधर से मैं थोड़ा मैथ्स पे अच्छा होने लग गया था उसके बाद से. तो ऑल थैंक्स टू द ट्यूशन टीचर के शाउट आउट. लेकिन मेरे को ये जानना है कि चलिए स्कूल में यू वर टॉपर, यू हैड सच अ पैक्ड शेड्यूल लाइक यू सेड, ट्यूशन सब कुछ एवरीथिंग. व्हाट गॉट द ट्रांजिशन टू गेमिंग की कहाँ पे वो इंटरेस्ट पैदा हो? क्योंकि अगर 10th तक आप इतना पढ़ाई में लगे हुए थे तो कहाँ पे आया वो इंटरेस्ट? आई थिंक 10th में ही आ गया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सबसे बड़ा मेजर रोल था. लॉकडाउन पे ही आई थिंक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पबजी खेलता था जब वो बैन हुआ पबजी मोबाइल. उसके बाद मेरे दोस्त लोग जो मेरे जो रियल लाइफ के दोस्त लोग थे, वो लोग इतना ज्यादा फोन ओरिएंटेड नहीं खेलते थे. वो लोग पे उस समय पीसीज अच्छे थे, तो वो लोग CS:GO खेलते थे. उस समय वैलो का बीटा लॉन्च हुआ था, तो वो लोग ही मेरे को बोला कि क्या कर रहा है बैठ के आजा. तो मैं वही ऑफिस पीसी पे 30-40 पे जाता था, तो मेरे को मजा नहीं आया स्टार्टिंग में. तो मेरे को वो लोग बोले सोवा खेलने के लिए उस समय. तो मैं सोवा ऐसा तीर मारता रहता था हर जगह. मेरे को कुछ आइडिया नहीं था क्या कर रहा हूँ मैं.
तो वहां से जब मैं आई थिंक जब मैं गोल्ड पहुंचा उसमें मेरे को समझ आया कि हो क्या रहा है धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे लाइक खेला बहुत खेला बिकॉज लॉकडाउन था। सुबह ऑनलाइन क्लास 2-3 घंटे के लिए होता था, पूरा दिन फ्री। घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब तो बिजी है भाई, कोविड चल रहा है, सब अपना जान बचाने में बिजी है, कौन बोलेगा इसको कि तो गेम मत Exactly, तो खेलता रहा। तो उधर से थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा डाउन हुआ और गेमिंग उठा। फिर उसके बाद मैं घर पे लाइक 10th खत्म हो गया, अपना बोर्ड कैंसिल हो गया, द फर्स्ट बैच I remember that, yeah. 10th बोर्ड कैंसिल। तो मेरे प्रीवियस मार्क्स की वजह से अच्छा मार्क्स आ गया था, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है। फिर 11th पे मम्मी ने भूत चढ़ा जाता इंजीनियरिंग, तो साइंस, कंप्यूटर साइंस ले लिया, साइंस वही चल रहा था। तो फिर मैं बोला मेरे को कोडिंग करना है, तो अच्छा पीसी चाहिए, बहाना, सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने तो बहाना मारा, जुगाड़, सुन गाइस, अच्छा पीसी चाहिए था। तो कुछ ना कुछ करके लाइक 1 लाख के आसपास का पीसी लाया घर पे, जिसमें उस समय मेरा 165 हर्ट्ज था, तो 200 प्लस एफपीएस आते थे। दैट वाज मोर देन एनफ फॉर मी, मेरे लिए तो जन्नत था। वो क्या है मतलब इतना स्मूथ कैसे स्मूथ चल रहा है। तो वो पीसी आते ही मैं 60 हर्ट्ज पे आई वेंट टिल डायमंड 2, फ्रॉम देयर 1 महीने में मैं इमो 3 पहुंच गया लिटरली इन दैट थिंग। तो लाइक ओके कुछ तो है भाई, अच्छा चल रहा है तो मैं अच्छा मार रहा हूँ। फिर विद इन 2 मंथ्स ऑफ ग्राइंड मैं रेडिएंट हिट किया। जब मैं रेडिएंट हिट किया भाई, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया भाई, मैं रेडिएंट हिट किया हूँ, तुमको जो कर रहा है उखाड़ लो, मैं तो रेडिएंट हिट किया हूँ। मैं को बहुत खुश हुआ था। मैं घर में भी बोला, मम्मी को बोला, पापा को तो मैं कुछ बोलता नहीं था, डर लगता था। मम्मी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा सीन है, मैं थोड़ा सा इसमें ट्राई करने वाला, आप पापा को समझाओ, आप पहले शुरू करो, मैं बाद में संभालूंगा धीरे धीरे। तो मम्मी ने मेरे लिए बहुत एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया है पापा को समझाने में, घर वालों को समझाने में, क्योंकि मैं मम्मी से सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, हर दिन बात करता हूँ ऐसा। तो मम्मी आई थिंक मम्मी ने मेरा बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था। उसके उन्हीं की वजह से मैं इधर हूँ जो भी हूँ। अगर वो मेरे को इतना मतलब छोड़ते नहीं है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं नहीं कर पाता कुछ भी। Nice, that's actually वो काफी ऐसा एक सपोर्ट हो फैमिली में तो काफी हद तक you can actually succeed and clearly as well, क्योंकि now you are one of the prodigies of our country and I think कि आंटी जी काफी खुश होंगे and I'm pretty sure she's very proud of you. लेकिन you said you were a little afraid of your papa, right? So tell me a little bit about that relationship with your dad. I think it's a मतलब मेरे को वो कभी नहीं कुछ नहीं बोलते, but this I think it's a normal like father son relationship. इतना बात नहीं हो पाता, वो काम पे या तो बिजी रहते हैं, तो इतना बॉन्ड नहीं हो पाया था बचपन। अभी अच्छे से बात होता है। So there's all this. But what was his first reaction जब मम्मी ने जब बोला था कि मम्मी को, पापा ने वही बोला कि क्या है, मेरे को तो पता नहीं है कुछ। पापा ने ऐसा बोला कि है क्या है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है कि तू गेम खेल के कुछ कर सकता है। तो वह बोले कि तू जो भी कर रहा है कर, बट पहले अपने पढ़ाई भी कंप्लीट कर, सो दैट एटलीस्ट कुछ तो बन पाए तो जिंदगी। तो ऐसा था। प्लस मेरे घर वाले थोड़ा एग्री कर गए, बिकॉज एक बिजनेस बैकग्राउंड है अपना, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो लोग एग्री किए। अगर जॉब वाले होते तो मे बी नहीं करते probably. तो दैट्स द सीन। Would you think that अगर मम्मी का शायद चलो लेट्स से 10% या 20% कम सपोर्ट, अगर वो तुम्हें ट्रस्ट करके एक और शहर में भेज के ऐसे एंड गेट यू टू प्ले इन अ डिफरेंट टीम, अगर वो इसको सपोर्ट नहीं, तो क्या तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती? लाइक वुड यू हैव गिवन अप गेमिंग? आई थिंक अगर ज्यादा प्रेशर आता तो आई थिंक मैं छोड़ देता फॉर श्योर। आई थिंक हर इंडियन बच्चे के साथ वही होता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग प्लेयर्स आते हैं, बट वो लोग नहीं कर पाते परस्यू बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजन है। पेरेंट्स तो वो दैट्स अ छोटा रीजन है, बट देन स्टिल इट्स अ मेजर वन। बट देन आई थिंक खुद का डेडिकेशन भी मैटर करता है। देखो मैं ऐसा श्योरली नहीं बोल सकता, बिकॉज अगर मेरी मम्मी ने इतना पहले से मेरे को सपोर्ट नहीं किया तो क्या पता मैं अलग बन गया होता, मेरा माइंड ही चेंज हो गया होता। नेवर नो, बिकॉज मैं जब तक मैं 12th आ गया था आई वाज 100% श्योर। मेरे को मेरा सीन था कि मेरे को 12th कंप्लीट करके मेरे को जाना है। तो मैं कैसे तैसे करके साइंस में 79% लाया, मैं बहुत खुश हूँ। नॉट बैड, बहुत खुश हूँ। मेरा खुद का 72 था, तो मेरा 6 सब्जेक्ट है, मेरे को बचा जाता 6 ऑप्शन। Nice. So once you finished 12th, abhi of course you are here. Are you here full time? Or have you joined the college? Like मैं ऑनलाइन कॉलेज कर रहा हूँ। ऑनलाइन कॉलेज कौन से कॉलेज में हो? SRM. Okay, so I mean that is also pretty good as well. लेकिन how are you able to manage both? क्योंकि I'm pretty sure अभी तो ऑनलाइन, I'm pretty sure कि ऑफलाइन चल रहा है कॉलेज, है? नहीं मतलब मैं फुल ऑनलाइन कॉलेज कर रहा हूँ, like it's a different one. Okay, you've taken a course itself like that. It's an undergraduate course basically. Yeah, what subject are you pursuing? BPA. तो आपको पसंद आ रहा है क्या, और is it like honest, I'm doing it for the sake of a degree, but then I just wanted to I've been interested in business since childhood because of the background.
So I just wanted to learn few things. तो जितना मेरे को सीखने को मिल रहा है, I'm just taking it in. Speaking of business, आपने बताया कि आपके पापा business background के, तो what business is your family into? Like it's wholesale commission agent of vegetable. आपने कभी दुकान में जाके मदद की है कि नहीं, कभी नहीं. मतलब मैं जाके देखता हूँ, बट मेरे को पापा हमेशा दूर रखते हैं. Okay. मत संभाले, सब क्या है. क्या उनको कभी लगता है कि एक दिन हाँ you take over? अभी लगता है. अभी लगने लगा नहीं लगा था. Okay. अभी लगता है कि अभी थोड़ा मेरे को खुद से बोलते कि तेरे को कुछ समझना है तो मेरे को बता. Are you interested? क्या आपको? For sure, because family business है, मतलब business is business. Agreed. तो वैसा. तो speaking of business, of course, esports भी एक type of business ही है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा it goes up and down in terms of the things that happen, right? और पिछले एक साल में से, of course, there's been a little bit of an esports winter, as a lot of people say. Tournaments, of course, you know, VALORANT has gone, come away because of the franchise thing and everything. Again, I wanted to know from you. You were among the upcoming players. Now you've, you know, established yourself कि हाँ, मैं यहाँ का एक player हूँ जो young है और बहुत strong भी है. What other qualities do you think a young player needs apart from, of course, skill कि वो एक esports player बन सके? I think सबसे important will be ego and willing to learn. Because मैं जब इधर आया था, I think बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी आए हुए हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए हुए हैं. Are you just giving a smirk off camera? लेकिन I think बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आए हुए हैं पहले जो like अच्छे होंगे, they have a good skill set, सब कुछ अच्छा है, but then they're not willing to learn. Their ego is there. I think that is one of the main reasons कि क्यों एक प्लेयर सक्सीड नहीं कर पाता अपने लाइफ पे, whether it be esports or it be any field. If you are not willing to learn and if you think you are already the best, then you can't do anything. So like मैं जब ये टीम में, मैं like for example VCL वाला टीम, that also I learned a lot. For example वो टीम तो अभी नहीं है, तो वो जब मेरा टीम चेंज हुआ, मैं पूरा ग्राउंड टू जीरो गया वापस. जो सीखा था, of course it's there in my head, it will never go away. But then जब सनी भाई ज्वाइन किए, उन्होंने मेरे को जितना हेल्प किया है, लाइक बिकॉज वो एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है, वो लोग जितना एक्सपीरियंस उनके पास 1% भी नहीं मेरे पे. तो मैं उनके साथ ही बैठने लगा, उनके साथ लाइक मैं स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड था, ऑफ कोर्स. मैं कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ खेलने को मिलेगा. तो मतलब उनका लाइक वो लोग जब आए, उनके साथ बैठने का टाइम लाइक ट्राई किया, तो वो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग जिधर भी जाते हैं तो मेरे साथ गेम के रिलेटेड बस बात करते रहता हूँ. तो ऐसे जब तक वो लोग ना पक जाए तब तक मैं सोक करता हूँ. ऐसा that was my goal, starting goal when I joined the team, कि जितना इन्फॉर्मेशन ले सकूं. अभी आई थिंक मैं बहुत ज्यादा, मतलब गेम नॉलेज में भी मैं अभी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ. I myself believe because of them. प्लस मैं कभी अभी कुछ नया चीजें सीखता हूँ, मैं उनको भी बोलता हूँ कंफर्टेबली. भी हम लोग बहुत अच्छा हो गया अपना टीम लाइफ. मतलब जब नया था, अभी से हम लोग अभी चड्डी बड्डी है सब लोग. That's good. I think वो एक टीम सिनर्जी बॉन्डिंग काफी इम्पोर्टेंट है, which a lot of teams struggle with, क्योंकि नई टीम, because we've seen this trend, right, कि इंडिया में ऐसा है कि एक टीम बनती है टूर्नामेंट के 1 महीने पहले बनती है, टूर्नामेंट के 10 दिन बाद टूट जाते हैं, बस gone, and then once again we go with the same cycle. So what is the, you know, I would say the secret formula that you guys had कि you were here, I think, so you've been the longest, I think, in this team with, of course, Aryu and Disrupt. जो last season की team थी, where you, I think, you had Kaizen and Pixel. Wimp also. And now, to having this addition, what has the secret been with the three of you core sticking together and building this team? I think it wasn't our choice at all. It was totally the management choice to whom to keep and whom to remove. We all were like, हम लोग VCL में इतना हमको bond करने का time मिला नहीं था. Yeah. But then I think they trusted us 3 and they just kept it, and then they added 2 of the more like best duo of India. Yeah. I'd say. So I think management ने बहुत बड़ा major role play किया है. But उसके बाद जब अपना team बन गया, I think V5, I don't know how, like it's a rare thing. We gelled up very fast. Like मतलब हम लोग, I think like सिर्फ गेमिंग में नहीं, like how do you say, like बाहर जाना, like bond करना, like I think that plays a major role also. Yeah. Like staying in the one roof, eating together, like doing all the stuff together. Plus जब से कोच आए, उन्होंने जितना हमको हेल्प किया है, सब जो कर रहे हो एक साथ करो. कुछ भी कर रहे हो, गलती कर रहे हो एक साथ करो. So I think that has also like helped us.
That is one thing. ये team synergy, I think, even if you have like superstars on your team, कभी-कभार वो team भी काम नहीं करती. But if you have a set of good 5 players who understand each other, it goes a longer way. So speaking about that, you were part before, of course, True Rippers, and before everything, before the entire whole fame part of you started. Chilcord was your rise to success. Tell me about that team. क्या हुआ? How did that team come together? वो टीम में आई थिंक पहले से सीतन, सोनिक एंड वेंकी, वो लोग आई थिंक पहले से दोस्त थे. मतलब they also went through I think they met through Fortnite में भी आई थिंक. Yes, that's what Venka told me. मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था Fortnite का, so मैं ऐसे ही मुंबई सर्वर में खेलता रहता था रैंक. From there I had like वो लोग मेरे टीम में सामने आते रहते थे. मुंबई सर्वर में रिपीट होते हैं प्लेयर्स बहुत ज्यादा, कम प्लेयर्स है जो अभी तो पता नहीं, अभी तो मेरे को मिलता ही नहीं मैच मुंबई सर्वर में. तो उस समय so they invited me to a Discord server called Chilcord. अभी भी वो Discord server है, इतना एक्टिव नहीं बढ़ा है. तो उससे like वो उस समय was I think the मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव सर्वर ऑफ इंडिया ऑफ वैलोरेंट. 10 VC भरे पड़े प्लेयर्स में, सब लोग खेल रहे हैं. तो मैं उनके साथ गया ऐसे, तो मैं उधर देखा कि वो लोग एक टीम बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अलग अलग लोगों को. बहुत सारे प्लेयर्स भी जो अभी भी है, उन लोगों को भी ट्राई में होता मैं नाम नहीं बताऊंगा. तो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहे जैसे, तो मैं ऐसे रैंडमली बोल दिया गाइस मेरे को ट्राई कर सकते हो क्या. तो मैं थोड़ा सा दोस्त बन गया था खेलते खेलते रैंक. तो जैसे आ जा भाई ऐसे खेलते हैं. फिर हम लोग खेले पहला आई थिंक हम लोग पहला टूर्नामेंट जो खेले, हम लोग लोकल टूर्नामेंट्स खेलते रहते थे 5,000 10,000 रुपए का जो भी थे. तो वो जीत गए हम लोग. तो मैं उस समय खेलता था आई थिंक इनिशिएटर खेलता था मैं. तो हम पांचों का लाइक ऐसा था कि सब लोग का स्कूल था, बस सीतन का कॉलेज था उस समय और सबका स्कूल था. तो हम लोग एक दूसरे को रिलेट कर पाते थे कि भाई स्कूल से आए, जिस मतलब पढ़ाई भी करना है, सब कुछ करना है. तो आई थिंक वो वाला जो एज ग्रुप जब सेम हो गया ना, तो वी कुड रिलेट लाइक हम लोग का वाइब मैच हुआ. यू अंडरस्टूड ईच अदर वेरी वेल. सबके घर में दिक्कत है, सबके घर में सब कुछ है, लाइक सब कुछ सिमिलर ही हो रहा है. तो फिर हम लोग एक साथ बन गए वैसा. आई थिंक दैट हेल्प्ड अस. एंड वेंकी बीइंग द सुपरस्टार, उसने हर मैच में 20-20 30-30 मार के हम लोग को भी कैरी कर दिया. So Chilcord of course was your rise to success because वहाँ पे आप लोगों ने एक ऐसा I think through time you guys established yourself कि we're a set of 5 youngsters who can disrupt the entire ecosystem right now because you guys were beating some of the top teams at the time as well. और किसी ने expect नहीं किया था कि आप लोग हम लोग I think टॉप टीम्स में आई थिंक हम लोग आरजी को हराए थे, मतलब जो नो बंस है, but you were there close, we were close. Yeah, you were there amongst that top, let's say top 5 teams of India at the time, and you guys were constantly going up and down with that top 5, and wo competition to have while maintaining school, having very less practice compared to full-time players, and on top of that being able to create strategy, synergy, और वो खेलना उस level पे काफी मुश्किल है क्योंकि most of the players that time were aim gods. I still think कि उस वक्त का जो Valorant था हमारे country में, it was heavily aim dependent rather than game dependent. And you guys were able to compete with that. That's the thing that showed that you guys have the capability. Now, उस वक्त से अब तक का, what has been your most difficult I would say part? One for the esports side, and give me one key life में कोई इमोशनली स्ट्रगल सम मोमेंट जो आपके लिए है जहाँ पे आप बोलते हो कि यू मस्ट हैव थॉट योरसेल्फ आई डोंट थिंक आई शुड कंटिन्यू एनीमोर. आई थिंक वैसा फेज मेरे लाइफ पे आया नहीं अभी तक, बट देन आई थिंक इतने बार जब सेकंड आते रहते हैं ना, तो आई थिंक दैट हैज लाइक थोड़ा सा मेरे सिर पे आ गया था लाइक फॉर सम टाइम. बट लाइक आई यूज्ड टू थिंक लाइक स्टेज पे तो वी कांट शो दैट मच इमोशंस, मैं कंट्रोल करता हूँ जितना हो सके. तो लाइक आफ्टर कमिंग बैक टू द रूम या जो भी सोचते रहता हूँ कि लाइक क्या हो रहा है, हम लोग सेकंड क्यों आ रहे बार इतना क्लोज जाते हैं. इधर 1 साइड हार जाते तो इतना वो फर्क नहीं पड़ता, बट इतना जब क्लोज जाके आते क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग, वही देन इट जस्ट स्टेज अवे लाइक स्टेज इन द हेड. देन जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है साइनिक भाई, वो लोग आके समझाते कोई ना, नेक्स्ट. आई थिंक वही है. आई थिंक दैट हैज बीन माय लाइक yeah, that's my lowest, I think. Like I have, like truly speaking, I haven't gone like that down in my life. Touch wood. Yeah. But what about your life outside of esports? What have you ever had any moments जहाँ पे आपको लगा हो कि this is been और कभी कुछ नहीं, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, तो ठीक है. Like to be honest, that's a good thing, and that's a good thing, and I hopefully ना भी हो. But I want to shift to another topic
when you started off your career, what was the biggest difficulty that you faced? I think managing like because जब मैं 12 चालू हुआ तो I think that year was my like सबसे hectic year था मेरे like मेरे पूरा life पे. I think 3-4 like max 5 hours of sleep every day because like 12 tough है भाई, जो भी बोल रहा हूँ, it's tough. Science is tough. Agreed. Like सुबह like because मेरा स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा मतलब I don't know how but like it used to help me a lot because मेरे like जल्दी उठना पड़ता था, but then अपने साइंस स्टूडेंट्स का मेरे स्कूल में थोड़ा जल्दी छुट्टी होता था. It used to get over by 1 PM. Okay. So I used to get time to actually play because usually scrims वगैरह शिलकॉट में तो like every afternoons में होता था, right? तो मैं 3 बजे तक घर आता था तो I could play. So I think but like after playing जो like 12th का of course स्कूल वाले प्रेशर देते ही थे कि होमवर्क स्टडी तो उसकी वजह से I think like every day like sleeping at 2-3 AM जो अभी भी करता हूँ, बट अभी देर में उठता हूँ, वो अलग बात है. बट देन उस समय 6 AM में उठना पड़ता था. तो आई थिंक दैट वाज आई थिंक माय हाईएस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड. मैनेजिंग बोथ स्कूल एंड हां मतलब कभी-कभी समझ नहीं आता क्या करूं, मेरे को नहीं उठना है, नहीं जाना है, बट देन स्टिल मेरे को करना था. लाइक आई न्यू इट, लाइक मेरा एक गोल था, ये साल खत्म हो जाएगा देन आई विल बी फ्री. मेरे मम्मी ने भी ये बोल के रखा था कि ये साल कुछ ना कुछ कर दे भाई, जो भी करना कर दे, बस अच्छा कर ले, थोड़ा एग्जाम में थोड़ा सा नाम रख ले अपना, पूरा गंदा मत कर. फेयर इनफ. तो यू ऑफ कोर्स इस जनरेशन से जहाँ पे अभी काफी सारे प्लेयर्स जो है जो अभी स्कूल से खेल रहे हैं, राइट? एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. वेंका हिमसेल्फ ऑफ कोर्स स्टिल वेरी यंग. आई थिंक ही इज 2 years younger than you, right? 1 year younger than you. So he also is अभी उसने जस्ट आई थिंक एग्जाम्स खत्म किए थे, उसने अभी उसका अभी 12 चल रहा है. हाँ, उसका अभी 12 चल रहा है. तो आई थिंक ये जो ट्रेंड आई थिंक टुवर्ड्स अ यंगर साइड ऑफ प्लेयर्स जो जा रहा है, आई थिंक इट्स अ लॉट बेटर फॉर आवर कंट्री एज वेल, क्योंकि उस वक्त लेट्स से अ डेकेड अगो सारे प्लेयर्स ट्राई कर रहे थे लेकिन वो प्रोफेशनल प्लेयर्स बन रहे थे आफ्टर दे रीच 21 22. अभी भी वही चल रहा है. नाउ देयर आर प्लेयर्स हु आर 18 17 16. For hell, there's 14-year-old players who are better than so many of the people we know. So let's say if somebody who's now who's gone through that difficult phase, अगर आपको कोई प्लेयर को जो अभी उभर के आ रहा है 15-16 year old, उसको कोई एडवाइस देना हो कि कैसे मैनेज करे बिटवीन, इफ यू आर अ यंग प्रोडिजी, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात है कि व्हाट यू हैव इन योर माइंड, इफ यू लाइक यू हैव टू कीप अ ड्रीम. लाइक मैंने में एक ड्रीम था कि आई वांट टू डू इट, आई विल डू इट. इफ यू डोंट हैव इट देन यू कांट डू इट, सिंपल एज दैट. बट अगर आप पे वो विल पावर है कि मेरे को ये दोनों अभी यूजुअली 10th 9th 10 के आसपास यूजुअली शुरू होता है का वो जो भी आता है लाइक क्या करना है लाइफ पे. तो आई थिंक अगर आप अभी उस एज में हो तो if you really think you can do it then you can do it. तो अगर वो विल पावर रख रहे हो तो then I think that's the only way you can go. अगर वो विल पावर चले जाता है बीच में तो I think you will just fail, for sure you will fail, because first of all तुमको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा. अगर माइंड सेट नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे. That's my first advice. पूरा माइंड सेट लाइक पूरा प्रॉपरली माइंड को स्टेबल करो कि मेरे को करना है. ऑटोमेटिकली पेरेंट्स समझ जाएंगे अगर तुम्हारा डेडिकेशन है. If you show that much level of confidence, dedication and like थोड़ा सा उसमें बीच में like you have to go with your studies, you cannot leave your studies at all. Like that's from my experience. तो उतना देना चाहूंगा कि पहले अपना माइंड को सुधारो, सब कुछ हो जाएगा. I think that studies point what you said is actually very important as well, क्योंकि a lot of players वो सोचते हैं कि मैं पूरा इसमें घुस जाऊं कुछ भी करके, like you know one of those Mr. Beast cannot gamble that. Yeah, it's 1 in a million thing कि you reach a point कि you know it works for you, because let's be honest, real life में ऐसा होता नहीं है, सबके साथ ऐसा होता नहीं है. If you are really 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 good हो जाए, लेकिन there are a lot of players I think अभी भी जो है जो they are that good लेकिन उनके लिए हुआ नहीं है क्योंकि वो situation वैसे बन गई. So even I would say, being somebody who's also come into the same industry but couldn't be a player, has entered into different realms, that studies I think would help you at least have some money in your life जो आपको at least let's say अगर आप कॉलेज सब खत्म कर दिए तब भी आप परस्यू कर सकते हो, क्योंकि यू कैन वर्क फुल टाइम and you can also have your career on the side to try and work it out. It's tough, but then it's still possible. It's possible. It's not impossible. Only if you want. Yeah, only if you want. Only if you want. Now, speaking about things that you want, you have come so far. You've beaten so many others, and अब आप ऐसे एक player हो जो काफी teams I would say कि आपको instantly playing 5 में ले ले. At least in my opinion.
But at least in my opinion, I think you are one of the better players of India who can play that controller role, can play the flex controller role really well. What, according to you, is the biggest difference between Techno of 2023 and Techno of 2024? जो last year के VCL था, वहाँ से अब तक का biggest difference के आपके personal life में क्या रहा है? Difference I think will be confidence and game knowledge. I think aim wise सब लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एम इतना मैटर नहीं करता है. वो तुमको समझ आ जाएगा आफ्टर यू रीच अ सर्टेन लेवल. तो आई थिंक आफ्टर लाइक वीसीएल वाला वाज आई थिंक वीसीएल में मेरे को विम भाई ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. लाइक ब्रो तू छोटा है भाई, तू ही है जो मारेगा. तू अगर सोचेगा तो कुछ नहीं होगा. तेरे को सोचना बंद कर. तो फर्स्ट ही आई थिंक हेल्प मी इन बिल्डिंग माय फर्स्ट स्टेप, दैट वाज कॉन्फिडेंस. Then game knowledge and more confidence शागनिक भाई सनी भाई ने दिया है, प्लस इन लोगों ने भी कि मतलब तू जितना लाइक मैं पहले कहता था लाइक बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम इन अ लैंड इवेंट, लाइक प्रॉपर लैंड इवेंट. तो मैं खुद के जो लाइक इन गेम लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता था. बिल्कुल भी नहीं करता था पूरा यूटिलिटी हैवी जितना जिंदा रह पाऊं. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. इट्स एफपीएस गेम, यू हैव टू यूटिलिटी इज यूटिलिटी, बट देन यू हैव टू विन. जितना यूटिलिटी डालो, अगर तुम मारोगे नहीं तो कैसे जीतोगे? तो आई थिंक that has helped me a lot. Like I think वो वही changed है अभी के लिए, confidence and game knowledge. अभी के लिए. So you of course have had the chance to play with a young set of squad from Chilcot, and now from that you've taken a jump to playing in a team with 2 imports and 2 experienced players. You are the youngest right now in this team, right? So being the youngest in this team, what has been your biggest takeaway? सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा है from all of the players who are surrounding you? Like lesson for example. Anything, could be anything. What's the biggest takeaway? I think biggest takeaway will be like positioning and like mindset. Because like they have helped me. Like तू जितना भी मतलब for example हम starting में जब अपना टीम बना था तो हम लोग बात कहते कि देख अपना टीम अच्छा है अभी. We all know our team is good, but then we all also know that it will take time to reach a certain level. तुम लोग starting में performances down होगा. हम लोग सबसे पहले हम लोग टीम शारा फंसा रहे थे, अपना फर्स्ट ऑफिशियल गेम था and we lost it. तो हम लोग सोचे कि क्या हो गया, हार कैसे गए ये टीम. मेरे को तो सोचने मेरा माइंडसेट उस समय था कि सानी भाई है, कैसे हार सकते हैं हम लोग. फिर वो भी उन्होंने हेल्प किया कि अभी स्टार्टिंग फेज है, वो हार सकते हैं. तो दैट इज अ मैच्योरिटी लेवल. और आई थिंक सागनिक भाई ने मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प किया इन स्विचिंग टू कंट्रोलर रोल, बिकॉज वो पास्ट में जो भी नॉलेज गेन किया था उन्होंने लाइक वीएलटी से जो भी उनके गेम प्ले से, तो वो हमेशा मेरे को बोलते रहते कि तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है. तो माय बिगेस्ट रोल मॉडल इन दिस टीम इज सागनिक भाई. Got it. I think pretty much everyone's will be Shagnik Bhai only, for sure. Do they treat you as the little brother of the team, or are you a victim of bullying? Nah. Like I can tell you that thing. Like I have not been bullied in this team. That I'm happy about. Okay, that's good. Like everyone treats everyone as their brothers. That's good. Okay, so I wanted to take this to a different direction now. True Rippers के बारे में बात करेंगे about the current season. लेकिन उसके पहले I wanted to talk to you about the international circuit a little bit. Sentinels, of course, just won Masters. And are you a Sentinel fan? Like I watched all of the games. You watched all of them. Okay. So I know Venka is a big Sentinels. वो हमने बात भी की थी Venka के एपिसोड पे. लेकिन which team or player do you look up to in the international circuit? I think मेरे को like not player but like team मेरे को Fnatic बहुत ज्यादा पसंद है. Because मेरे को पहले like इतना समझ नहीं आता था मिड राउंडिंग क्या होता है. बट देन आफ्टर आई लर्नड व्हाट इज मिड राउंडिंग एंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज दैट, देन आई स्टार्टेड लाइक आई फेल इन लव विद इट. लाइक मेरे को वैसा ही खेलना है हमेशा, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी वैलोरेंट. ट्रू. बिकॉज़ समझता पेपर्स अगर है तो घुस जाएंगे वो लोग, बट देन स्टिल वो लोग भी मिड राउंडिंग करते हैं. एवरी टीम इन फ्रेंचाइज आई थिंक डज मिड राउंडिंग, व्हिच आई डिडंट नो बिफोर. आई थिंक नॉर्मल पब्लिक को समझ नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, जाके अलार्म बोर्ड क्यों तोड़ रहे हैं, उधर प्रेशर क्यों कर रहे हैं. तो आई थिंक लर्निंग दैट, I think the highest I've learned is from Fnatic and also DRX a bit. All the slow-based teams. I think those. Your game style also kind of resonates. You have a very similar. कि अगर Fnatic में
let's say Techno एक दिन चला भी जाए, it wouldn't be something out of the box. I will easily grasp them because I have been copying them. Fair enough. Learning them, yeah. So international circuit, of course, this time Fnatic didn't make it to Masters. Was that a surprise for you? Yeah, for sure. Everyone, I think, not for me. Everyone. Also DRX. Yeah, DRX also. Yeah. I mean, Command Cops. I मेरे कोच एनालिस्ट ने भी पहले से बोला था, because वो लोग यूज है, वो लोग बोले थे कि Command Cop इस बार अच्छा खेल रही है, you never know. हम लोग बोले ना भाई कैसे होगा भाई, Fnatic is Fnatic. Dappa. It happened. Yeah, agreed. So speaking of teams that could have and probably should have done better, of course, हमारी team है जी. I want you to tell me initial thoughts without considering anything. What do you think about the team? I think it's a pretty balanced team. Like experienced है, firepower है, सब कुछ है. Coaching staff भी I have heard like it's pretty good. Public तो भाई बोलते रहे कि जो बोलना है भाई, hate तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा. I think they should just keep on continuing. I think मतलब क्या बोलूँ, like they're doing good. They just have to like just keep doing good. Forget about all the hate. Best of luck. You will. Is there okay? So मैं थोड़ा you can choose to dodge this. लेकिन I wanted to ask you, what did you think जब the second time against Zeta? Vipercom. First of all, choosing Bind itself as a repeat and then continuing with that single Vipercom. What was your thought when you saw that? I don't have any thoughts, but like I think they only choose it. I think because उन लोगों को scrims में exceptional performance मिला होगा. First of all, I think that's my opinion. I think, and I think वो लोग first match के बाद वो लोग board review क्यों होंगे? वो लोग बात क्यों होंगे कि ये गलती हुआ, इस बार फिक्स कर देंगे तो हो जाएगा. I think they had the confidence in the map. First of all, I think they had like पूरा स्क्रीन में उनको insane performance मिला होगा, वरना क्यों पिक करेंगे? I think that is true. I agree with that, and I think that वो mistake की जो बात आपने की थी वो शायद था, लेकिन मेरे को सिर्फ I think personally for me it was one thing कि if they had looked over, then they had a game plan क्योंकि double initiator and they had a single duelist. They could have actually done a lot more in terms of the faster side of the gameplay. Lekin they were playing contact everywhere. That was probably the biggest mistake. Lekin if they had chosen Sunset, do you think it would have been a different game? I think because their Sunset was really good. Like उनका game plan and like जो वो comp खेल रहे हैं वो actually match कर रहा था Sunset पे. उन लोगों का सब कुछ I think Sunset is their best map for now. उन लोगों का सब कुछ cleared है. Their post plans are good. Their like map awareness like is also good. There's अच्छा call कर रहा है उसमें वो वाले map पे for sure. Yeah, I agree because I was really hoping that when they picked when the map it came, they would have picked Sunset. 2-0 नहीं होता for sure. Yeah, I agree with that as well. And they wouldn't, I think, अगर 2-0 ना भी होता, अगर वो हार भी जाते, let's say they had lost 2-1 also, I think they would have given a much better fight because mentality would have been there. First of all, you never know. क्या पता map जीतने की वजह से confidence की वजह से you can they beat Bleeds the same way, so fair enough. चलिए जी की बात हो गई. Now the regular season also is going to be starting for them. Where do you expect them to end up at the end of the season? Do you think they can make playoffs, or do you think they can somehow enter champions? I don't know about champions, but I think this I think अभी किधर होगा वो, like this is for the stage 1 जो हो रहा है. This is for Masters, right? Again, this is for Masters Shanghai, yes. The Masters Shanghai. So I think they can reach. I think team is very much capable. They have the firepower. They have everything. Okay, let me put it this way. End of season, second stage होने के बाद champions table में कहाँ पे finish करेंगे? 1 to 11. Where do you like? You can tell me a bracket also. I think 4 to 8, something like that. 4 to 8. Yeah. Alright, mid of the table. Alright, that's not too bad. Okay. Now speaking about two rippers, where will they end in that table of 1 to 8 in VCL SA Split 2? Really want to end first? Like no, I'm not asking. I'm not going to playoffs. Playoffs अलग बात है. अच्छा group table, हाँ group stage. Where do you think you guys will end? I don't really care. Top 4 पे आ जाए. As long as you finish top 4, you don't want the top seeding. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना top seeding से. Fair, वो है, लेकिन like they say like कुछ फर्क पड़े कुछ change हो जाए तो then for sure top 4. Like we want to see. We'll give the best out of us. We'll try to win every match. Like doesn't matter if it's not like important or not. We'll try to give our best for sure. Yeah. Results भगवान के हाथों. We'll try our best. What was the starting bump that you guys got when you started the season, when you guys lost your first couple of games? I've spoken about this before also. Lekin there was that whole thing where you were trying to adjust the coach's way and your way. Yeah. But
instantly there was a spark within you guys from the third game, I believe, from the fourth game. From the fourth game, I think, because Yeah. third game, to be very honest, हम लोग पता था हम लोग जीत जाएंगे, because we are that much confident in us कि मतलब हम लोग like ये बहुत गंदी आदत है, but then I think for a team's perspective हम लोग कुछ teams को हम लोगों से like in the self हम लोग खुद के मतलब खुद की like we think that we are better than them and we Underestimate. beat them. Like sometimes we do it like knowingly, just that we get that confidence. Like it's not personal, nothing. It's just for our own confidence. For your own confidence. So I think हम लोग श्योर थे वो लोग जीतने वाले हैं. प्लस हम लोग थर्ड गेम के बाद हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को ये चीज फिक्स करना है, हम लोग को एक मिडिल ग्राउंड आना ही पड़ेगा. फर्स्ट टू गेम हम लोग पूरा कुछ भी हो रहा है हम लोग वो कोच के ये में ही जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग इतना दिन से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. वी कैन नॉट सडनली स्विच, राइट? वी हैव टू ट्रस्ट हिम. इट वाज गोना वर्क, बट इट वाज गोना टेक मोर टाइम. सो हम लोग इतना टाइम तो अभी दे नहीं सकते. वी हैड टू बैलेंस इट आउट. So that's what we did after, like during the third game भी बात हो गया था, but then fourth game तक we were already back on form. Yeah, I think that was I think you guys had this more जो एक quality which I believe कि you guys had more than the other team was a resilience, because जितना भी down जाए, I don't think you guys are considering that it is over. Yeah. You always have a way to make it back, and you've done that multiple times. LAN पे भी किया था, online stage पे भी किया था. अगर the one thing I think that intrigued me, you mentioned कि एक गंदी आदत है कि you guys underestimate couple of times to give yourself confidence. Yeah. लेकिन if there was one, let's say one really good thing that you guys do and one really bad thing that you guys need to improve on, what would be the thing as a team and you personally? Really good thing, that thing you said, like we never give up. Like even in LAN 210 score था या फिर 310, I don't remember that much. Then from there also we still like हम लोग एक वॉइस कम अगर वो रिलीज होगा वो वाला मैप का देखना, एक भी बार बात नहीं हुआ गाइस क्या कर रहे हैं हम लोग, गाइस ये करते हैं मतलब हम लोग का, मैं बोल रहा हूँ लैन में डिस्टर्ब ने बहुत ज्यादा हमको हेल्प किया था इन कीपिंग द वाइब अप, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था. सब लोग हो गया था, वो भी हो गया था, बट देन ही like every one of us tried to keep each other up. Like हम लोग 1% भी बात नहीं हुआ था कि नहीं हो रहा. ये करते ये होगा, फॉर श्योर होगा गाइस, मारो मतलब सब कुछ, मतलब बाय द फाइनल मैप सब लोग जाग गए थे वापस. So I think that thing is good. It's a 80-80 battle. I'll win. I'm that much confident. That's good. Okay. That's why like मतलब ऐसा लगता है कि like जो solo fights होता है, I win 90% of them. Okay, that's good to hear. Okay, now let's come to the present. You have finished second in Cup 1. Cup 2 is coming up, starting in 2 days from now, 3 days from now. And you guys are in the heat of attention, क्योंकि आप लोगों ने prove सबको wrong कर दिया. You proved everybody wrong, because even I remember the casters who were predicting you guys, nobody took your name. They said that True Rippers is not going to make it to the final. And now you're sitting atop of things where people saw you play 7 maps a day, and you came this close to beating that, and you guys would have probably given the best run that we've seen so far. What can we expect in Cup 2 and Split 2 from True Rippers, in your opinion? I think just expect us that we will do decent. Don't expect, I think हर team से every fans should expect from the team to do decent. Winning, I think वो on the floor देखना पड़ेगा. How do you get a start in a tournament? How is the current form of all the players? That also matters. Like मैं जितना भी बोल दूँ हम जीतने वाले हैं, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? True. I'll not say. Just expect a decent run from us. That's what I'll tell. Alright. Okay. Interesting. Okay. Let's play a little bit of a game now. Okay. We're finished with the main segment. चलिए वो सब तो बातें हो गई. अभी थोड़ा मसले के बात पे आते हैं. Let's do a little bit of a tier list session. Okay. Then we'll do a hot take, and then we'll do choosing between. Right. So tier list. Let's start with some players. Then I'll give you some teams. Okay. Okay. S, A, B, C, D. Same. Okay. Let's start with Aryu. Aryu will be A. Yeah. Alright. Let's go for Levi. Levi will be A. A. Sonic. B. SK Aussie. S. Caramel. A. Venka. S. Hawks. Hawks by recently S. Recently S. Okay. Let's give you Sai. Sai by A. A. Recently, but like normally he should be S, but recently A. Excalibur.
Excalibur? Yes. Yes. Okay. Move on. A and Q. A. A. All right. Let's give you Gorang. B. B. Okay. And what about LBY? LBY, his recent performance, I'd like to give him A or B के बीच में, like A, I think. A. Okay. Paradox. A. Deathmaker. S. LF. S. Techno. A. A. Yeah. थोड़ा इधर A, B के बीच में. A के B के बीच में. He's being modest, guys. Don't listen to him. He's a much better player. He's A और S के बीच में I would put. That's your opinion. I'll give A. Fair enough. Okay. Now let's come to teams. Right, all 8 teams. You're gonna put them into your list. Okay. Start off with OG. OG will be the whole team, I think B. But B. but they're doing great. They इंचल खेल रहे वो लोग. Okay, so A B के बीच में. All right. Okay. CG. C. Last team will be C. New Okay. team will be अच्छा थोड़ा. All right. Okay. Revenant. Revenant A. A. Yeah. All right. Two Rivers. It will be A. 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 Yeah. Grey Fox. S. Grey Fox is the only S team you think? For sure. Okay. MLT. A. The old team would be. Would A. you put the old team on the same tier as you and Revenant? Yeah. Because I think they were unlucky to be honest. Unlucky. Okay. Yeah. All right. RG. RG A or B के बीच में. Medal. I think they had a good run in start, but then later they couldn't do it. I think I'll put it in B. B. Yeah. All right. Okay. So that is Techno's tier list for VCLSA teams. Now let's come to hot takes. Okay. यहाँ पे थोड़ा मजा करेंगे. Let's start off with, of course, the most obvious and the most straight, easy question. SK Rossi will never make it back to tier 1. She will make it back to tier 1. He will make it back. All right. Revenant is overhyped. Yes. Revenant can actually win Split 2 unbeaten, as everybody say. I don't think so. No? We'll beat them. We'll try our best to beat them. All right. First of all, I got to say one thing. I think the one winner who's gonna win the split 2 for SA, I think he will be beaten multiple times in the group stage. I think so. He'll be at least be beaten. No team will go unbeaten for sure. I think. That's my take. Competition is competition is good. Right. Venka is, as of right now, a franchise level player. Yeah. Right. Okay. One team that you would think this, you should answer the thing itself. One team that you think doesn't deserve to be in that top 8 right now. Deserve to be. I don't think there are any teams now. Okay, let's say if you could replace one team with the another. Let's say T69 by any chance, who are there in the... They cannot. No, but if, let's say if you were to replace one team. The old Carnival game. Alright, safe answer. Yeah, I mean, that's how I think it was. I mean, they could be in the next cup if they are getting relegated. Yeah. Okay, fair enough. MLT will not perform even after they get their old OG roster. I think they will perform good. They will perform great if they get back their old OG roster. That was they won the VCS, of course. They have the confidence. They have the firepower. I think if they could, I don't know why did they break the whole team, but if they could go back to their old vibes, I think they can do pretty well. All right. Okay. Right now, Medal don't have the capacity to make it top 4 again. The new roster or the old roster? New roster. I think they will stay in like towards 5th, 6th. Towards middle. All right. Okay. If there is one thing that Revenant need to do right now to, let's say, become better, what do you think that is? They should add a game structure, like a game style for them, and they should add some coaching staff, I think, to help them. Coaching staff. Right. They're good individuals, but I think they need to work on mid-rounding. Okay. Revenant is a team made of superstars that just cannot gel together. Personally, I don't know them except Paradox. I don't know them pretty well. So if they have ego issues, then they can't gel up. If they are good to vibe and they are willing to learn, I think they can do a good team. Reckoning are a shadow of their former selves. I didn't understand. Reckoning are how good they were before VCLS, like all the off seasons. Okay. Yeah, how good they were. Right now, they're nowhere near as good as them.
Yeah, I will try to agree. But they're near, but like they're not as good as before. Okay. For sure, yeah. Okay. A&Q single-handedly carries Reckoning. Nah, their team helps him like a lot to get him frags. It's just, I think it's just not suiting them, but it's because of his teammate that he's getting. Aziz, if he comes back to India or if he comes back to the region, will be outplayed by the other current duelists who are already here. I think the competition is great now. Like he cannot do his dream run like last year. He'll have a good run for sure. Okay, all right. Techno will make it to franchise. Yeah, one day for sure. One day for sure. All right. Let's wrap it up with a little bit of choice game. All right. Quickly, let's start off with a little bit of light side. Breakfast or dinner? Dinner. Lunch or no, not lunch. It's a long drive or long walk? Long drive. Long drive. Okay. Road trip or air trip? Air trip. Air trip. Okay. Would you rather be at a swimming pool or rather be at the beach? Beach. Beach. Right. Sagnik bhai or Sunny bhai? And you're not supposed to answer just because he's standing there. पहले ही बोल कर रखा. Okay, fair enough. SK Rossi or Caramel? SK Rossi for his achievements. All right. Based on raw skill, SK Rossi or Venka? Venka. All right. Let's make this a little more interesting. True Rippers right now or global esports of 2022? Like the without franchise one? Yeah. True Rippers. True Rippers. Is it better than them? Yeah. All right. Okay. True Rippers of right now or Velocity of 2020? How is that possible? Okay. Let's make it this way. Velocity of the most recent roster last year. तो वही है ना, Sagnik by Sunny भी तो उधर है. How can? अच्छा, I'll tell. Let's just say it. Our team. True Rippers. Your team. Yeah. So you're saying this version of Sagnik and Sunny is better than that version? Yeah, of course. Yeah. Okay. Sagnik is behind the camera right now, smiling at everything. He's keeping a watchful eye on Techno. Alright. Vandal or Phantom? I should prefer Phantom because I'm a controller, but I'm still using Vandal. Okay. Alright. Sheriff or Deagle? Deagle from CSGO. Sheriff. Deagle नहीं लगता ही नहीं है मेरा. मैं कितना भी खेला हूँ, it doesn't hit. Alright. Operator from VALORANT or Op from CSGO? CS Op. Okay. If you had to introduce one thing from CSGO to VALORANT, would you rather introduce the skins or would you rather introduce the players? Players. I think players. Full players. All from across the world. Yeah. That's why I want to think about it. Think about it. If all those players come from that to this, the game will change a lot. Completely. For sure. Like it will be पूरा ground zero से start होगा. Everything. Okay. You never know. God एमर आ देंगे, सबको मार देंगे, तुम जो भी करो मार देंगे. It will be different. Okay. Raze or Jet? For now, I think Raze. Raze? Okay. Viper or Omen? Personally, me Viper. Viper. Yeah. Any map, huh? Any map, yeah. So you're kind of a less fan. Like I like Viper a lot. Okay. To play. But do you like less? Yeah, bro. He's just insane. Just wins every duel possible. Alright, okay. Omen or now the new agent Clove? I think both are very different. Omen, I can anchor a site, but Clove, I don't think I can anchor a site. I have to just run like helping bus. You cannot anchor a site like Omen. Okay. Clove. Alright. If you had to choose between one team of either Revenant or MLT, considering you are not there in the VCLS anymore, Revenant or MLT, who would you rather have win the whole thing? I think MLT. MLT. New MLT. New MLT. Yeah, new MLT. You would rather have new MLT win. Okay. Let's put it this way. Revenant or Medal, who would you rather have? Revenant. I just want the team which are going, those who want to win, should do well outside. Alright, okay. Last thing, you, Techno, up against Venka, who's better? I think currently I think he's better. Currently you think he's better? But aiming wise only gaming wise. Only gaming wise. What other sense are you better? I think I'm better in calling. And game sense wise, like not game sense wise, like overally I think we are equal, but like aiming wise I think he's better. So basically वो जो sentence हमने Twitter पे देखा था,
गेमर अच्छा है लेकिन आदमी that is being embodied here. No, he's also very good in. Very good. Sorry. People just don't know him. That's the thing. आदमी भी अच्छा है guys. Don't worry. आदमी भी अच्छा है. Well, Techno, thank you so much for this. It has been an amazing conversation and all the best for VCLSA. Thank you. And I hope, me personally, कि आप लोग जीते. My prediction तो आप टू रिपर्स का ही रहा है. Thank So you. I hope that you guys win. Thank you. And yeah, that's it. Thank you for your time. Thank you.